Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student and welcome in college physics. Student आज हम डिस्कस करेंगे exact or general proof of uncertainty principle. That is the general proof of uncertainty principle is this one. Del A del B mean uncertainty in A and uncertainty in B greater or equal to iota by 2. Integral psi star commutator AB psi into dx. Or this general form can be converted to particular form, that is uncertainty in position multiplied by uncertainty in momentum along x-axis is greater or equal to h cut by 2. The exact or general proof of the position momentum uncertainty relation. In order to have an exact mathematical proof of the uncertainty relation, we must have a precise definition of uncertainty. It is simplest and most convenient to define uncertainty as the root mean square deviation, also called the standard deviation from the mean value. Means the uncertainty is defined as del A is equal to, this whole expression is known as root mean square deviation is equal to this one, correct? Now, to find the general and particular form of uncertainty principle, let's consider we have two wave function, that is psi 1 is equal to operator A या A cap minus expectation value of A into psi, and second wave function psi 2 equal to iota into B cap minus expectation value of B into psi. Remember, this psi and this psi should be normalized, means these two satisfy this condition, that is psi star psi dx equal to 1 or integration of psi star psi equal to 1. This condition is known as normalization condition, where the A cap and B cap are two Hermitian operator, while the expectation value A या angle bracket A and angle bracket B show the expectation value of corresponding these two operator. To find the most general and particular mathematical form of Heisenberg uncertainty principle, let's consider this one. This is a Schwarz inequality. The Schwarz inequality is the modulus psi 1 psi 2 less or equal to norm of psi 1 multiplied by norm of psi 2. तो हमने इस नॉर्म ऑफ psi 1 इसकी वैल्यू को मालूम करनी है और फिर इसी इक्वेशन ए में पुट करनी है. सो वी ऑब्टेन द जनरल फॉर्म ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. नाउ we need to find out each term and then put in equation A, we get the required result. So first one, this one, norm of psi 1 square equal to psi 1 star psi 1 integration with respect to x, correct? तो psi 1 और psi 1 star की वैल्यू को पुट करें, कहाँ से? यहाँ से, correct? And so we obtain this expression, correct? But we know that operator A and B are Hermitian, and the condition of Hermitian operator is operator A phi 1 pi 2 equal to pi 1 into operator A pi 2. This is known as scalar product or inner product representation. This can be written as an integral form A star phi 1 star pi 2 integration with respect to x equal to integration with respect to x phi 1 star A pi 2. So it means the norm psi 1, this expression can be written as this one. This one. Norm psi 1 square equal to this one, or A cap minus A star into psi star, and this expression, this means इस expression को इस तरह दोबारा लेके, correct? And let this one, this term is known as our operator A, this psi is known as phi 1, and this whole term is known as phi 2.
So by apply this definition, this is our left hand side, this one. So इसका right hand side हमारे पास क्या होगा, ये होगा पाई 1 स्टार मीन्स साई स्टार, फिर ए की जगह ये पुट करेंगे और पाई 2 की जगह हम ये एक्सप्रेशन पुट करेंगे, मीन्स this is our left hand side according to this definition, and the right hand side of this definition will be what, the right hand side of this expression will be what, this one. So norm psi 1 square equal to psi star, and this one अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें a माइनस बी होल स्क्वायर के पाम में लेके, so this can be written as this one. इसको ओपन करें, so we obtain this expression. Now multiply this square bracket each term from left side to psi star and from right side to psi, so we obtain this expression. Correct? Now अगर इसको देखें psi star ऑपरेटर a स्क्वायर साई डी एक्स, अगर इस पर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू की वाली डिफिनेशन अप्लाई करें, मीन्स अगर इस x की जगह हम ए कैप स्क्वायर पुट करें तो यहाँ पर भी हम भी ए कैप स्क्वायर को पुट करेंगे. सो दिस होल एक्सप्रेशन कन्वर्ट टू दिस फॉर्म. सिमिलरली दिस इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू नॉट ऑपरेटर, सो ये आगे आ जाएगा. सो बाकी जो टर्म रहेगा हमारे पास साई स्टार साई तो बराबर होगा 1 के, बिकॉज वी अज्यूम दैट द साई एंड साई आर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज दिस वन, सिमिलरली दिस वन. तो यहाँ पर जो है एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास ऑपरेटर नहीं है, साई पर ऑपरेट नहीं होता, ये कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, तो इसको हम फ्रंट में लिखेंगे 2 के साथ. सो दिस बिकम -2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, और ए को एज इट इज रहने देंगे. अगेन अगर इसी पर हम इस डिफिनीशन को अप्लाई करें, सो दिस कैन बी कन्वर्ट टू दिस फॉर्म, दिस होल एक्सप्रेशन कन्वर्ट टू दिस फॉर्म. Now this is plus expectation value a square minus this is 2 expectation value a square. So this become psi 1 norm square equal to a square expectation value minus a expectation value square. This is our equation number C. Now from the standard definition of uncertainty is this one. So this can be written as this one. So equation number C become this one. Taking square root both side, so psi 1 norm equal to del A, uncertainty and A. Similarly, norm psi 2 square equal to this one. अगर यहाँ पर हम psi 2 और psi 2 स्टेरिक की वैल्यू को पुट करें और फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, as we simplify for psi 1 norm, so we obtain psi 2 norm equal to uncertainty and B, where del A and del B are variance or uncertainty and operator A and operator B. Now we need to find out the left hand side of Schwarz inequality, that is modulus psi 1 psi 2, as we know that psi 1 psi 2 inner product is equal to this one. अगर यहाँ पर हम psi 1 star और psi 2 की वैल्यू को पुट करें, so we obtain this expression, correct, or this can be written as this one. Similarly इसको दे कि हमारे पास ऑपरेटर ए मान एक्सपेक्टेशन वैल्यू होल स्टार है साई स्टार, तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं. सिमिलरली इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या सिंपल अगर इसको हम इस तरह का है कि हमारे पास जो है ये ए कैप स्टार है इनटू साई स्टार है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है बी कैप इनटू साई से, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्टार साई स्टार को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी साई से मल्टीप्लाई करना है. सिमिलरली हमने मल्टीप्लाई करना है ऑपरेटर ए कैप साई स्टार को एक्सपेक्टेशन वैल्यू बी साई से मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट. और सिमिलरली एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए स्टार साई स्टार को मल्टीप्लाई करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू बी साई से मल्टीप्लाई करना है. सो बाय मल्टीप्लाइंग दिस वी ऑब्टेन 4 टर्म्स, this one and this one. Now again we know that the wave function is normalized, इस कंडीशन को अप्लाई करें, so this whole expression can be written as iota हम बाहर करेंगे, यहाँ पर a कैप साई कैप b साई dx, करेक्ट, माइनस इस टर्म को हम देके iota एक्सपेक्टेशन वैल्यू b a स्टार साई dx, इसको यहाँ पर पुट करेंगे, करेक्ट. सिमिलरली इस एक्सप्रेशन को देके आयोटा
एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए स्टार बी इंटू 1, या इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह लिखेंगे। और ये वाला जो टर्म है अगेन इस पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू की फार्मूला को अप्लाई करें, सो दिस कन्वर्ट टू दिस फॉर्म। नाउ psi 1 psi 2, this whole expression can be written as this form because these two will be cancelled to each other. But operator A is Hermitian operator, so psi 1 psi 2 equal to iota a star psi star b psi dx minus iota b expectation value of b। इसी फॉर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं psi star a psi dx। Again, the inner product psi 1 psi 2 equal to iota this as it is minus iota expectation value of b, and this is again using the definition of expectation value to this convert to expectation value of a। So this is our equation number f। Now taking complex conjugate of this expression, अगर इसका हम complex conjugate लेने मीन iota को माइनस में iota में कन्वर्ट करें और माइनस iota को प्लस में कन्वर्ट करें, तो ये हमारे पास जो है iota बन जाएगा माइनस iota। ये हमारे पास है a कंजुगेट, अगर उसका हम दोबारा कंजुगेट ले लें तो ये a बन जाएगा। सिमिलरली साई स्टार है, इसका हम दोबारा कंजुगेट ले लें, ठीक, सो ये बन जाएगा साई, एंड दिस बिकम बी स्टार एंड साई स्टार डी एक्स माइनस प्लस माइनस जो है आयोटा प्लस हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ बी एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर एफ एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर जी। अब इस दोनों को हम ऐड करें, अगर इस दोनों इक्वेशन को हम ऐड करें, सो वी ऑब्टेन दिस फॉर्म, और बाय सिंप्लीफाई this expression can be written as in this form। This equation, this one, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं by changing the position of b star psi star and a psi। So this is our equation number h। Now apply this definition because we know that b and a Hermitian, phi 1 star a pi 2 integration with respect to x equal to pi 2 a star pi 1 integration with respect to x। तो इस एक्सप्रेशन पर जो है, इस टर्म पर जो है ये डिफिनेशन अप्लाई करें, सिमिलरली इस पर ये डिफिनेशन अप्लाई करें, मीन्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द राइट हैंड साइड, अगर इसको हम देखें, दिस इज पाई 1 स्टार a pi 2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, दिस पाई 1 स्टार इज नोन एज a psi star, this one, similarly this a is known as b operator and this pi 2 is known as psi। मीन्स अगर इस pi 1 की जगह a की जगह pi 2 की जगह हम ये वाले वैल्यू पुट करें, so we obtain this one। So the right side of this expression, this is our left expression, so the right side of this expression by using this definition will be what? This one। Similarly, the right side of this expression, this is our left expression, and the right expression of this will be what? Using this definition is this one। अगेन नोटेड, अगर इस एक्सप्रेशन पर हम ये डिफिनीशन अप्लाई करें, सिमिलरली इस एक्सप्रेशन पर हम ये डिफिनीशन अप्लाई करें, सो दिस होल एक्सप्रेशन, दिस विल बी आवर लेफ्ट साइड, दिस विल बी आवर लेफ्ट साइड, सो इट्स राइट साइड विल बी दिस वन, मीन्स बाय पुटिंग वैल्यूज ऑब्टेन दिस वन। सिमिलरली अगर इस इक्वेशन पर, सॉरी इंटीग्रल पर हम ये वाला डिफिनीशन अप्लाई करें, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड हो जाएगा ये वाला, और इसका जो राइट साइड होगा, और इसका जो राइट साइड होगा हमारे पास, वो हमारे पास ये होगा। मीन्स इस इक्वेशन नंबर एच में हमने इसकी जगह इसको पुट करना है, इसकी जगह इसको पुट करना है। कि रिमेंबर, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास है जेड, और ये जो है इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट है। तो हमें मालूम है कि हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो और उसका कंजुगेट उसके साथ हम ऐड करें, सो वी ऑब्टेन टू रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जी। सो इसकी जगह हमने पुट करना है ये एक्सप्रेशन, इसकी जगह हमने पुट करना है ये एक्सप्रेशन, और इसकी जगह हमने पुट करना है ये एक्सप्रेशन, टू रियल पार्ट ऑफ जी। So we obtain two real part of z, या psi 1 psi 2 equal to iota psi b star a star psi star integration with respect to x minus iota psi a star b star psi star integration with respect to x। यहाँ से iota को कॉमन करें, so we obtain this expression। Now again taking complex conjugate, अगर इसका हम complex conjugate लें तो हमारे पास रियल है तो ये एज इट एज रह जाएगा,
ये आयोटा कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, ये साई कन्वर्ट हो जाएगा साई स्टार में, ये बी कैप ये कन्वर्ट हो जाएगा बी में, ये एक स्टार कन्वर्ट हो जाएगा ए में, ये साई स्टार कन्वर्ट हो जाएगा साई में। सिमिलरली साई कन्वर्ट होगा साई स्टार में, ए स्टार कन्वर्ट होगा ए में, बी स्टार कन्वर्ट होगा बी में। क्योंकि अगर हम किसी भी कंजुगेट का दोबारा कंजुगेट ले लें तो इससे हमारे पास वही रियल नंबर आ जाता है। या सॉरी, अगर हम किसी भी कम्प्लेक्स कंजुगेट का, या अगर इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करें तो हमें आसानी होगी, जी कंजुगेट इनटू कंजुगेट इक्वल टू जी। So this expression convert to in this form, correct? Now this expression can be written as this one. अगर इस 2 को हम इस साइड लाए, करेक्ट, और यहाँ से जो है माइनस को कॉमन करें, सो वी obtain आयोटा बाई 2 साई स्टार ए के बी कैप माइनस बी कैप ए कैप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. Again, we know that from previous lectures that this is nothing but the commutator of 2 operator, which also defined as this one, a cap b cap. इसको हम बोलते हैं commutator a cap b cap, which means operator a operator b minus operator b into operator a. So this become this one. Now ये हमारे पास जो है साई 1 साई 2 की वैल्यू बन गई, नॉर्म साई 1 की वैल्यू और साई 2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी डिराइव की है. सो बाय यूजिंग श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी वी नो दैट फ्रॉम श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, दिस इज आवर श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी. यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू को पुट करें, साई 1 साई 2 नॉट की वैल्यू को पुट करें, साई 1 नॉट की वैल्यू को पुट करें, साई 2 नॉट की वैल्यू को पुट करें. सो वी obtain आयोटा बाई 2 साई स्टार कम्यूटेटर ए बी साई इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेस आर इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन ए एंड अनसर्टेनिटी इन बी, or this can be written as in this form, correct? This is the general expression for uncertainty principle and exact form of Heisenberg uncertainty principle, which means the product of uncertainty is greater or equal to 1 over 2 multiplied by commutator. Now the consequences of this expression as this is our general form of Heisenberg uncertainty principle, correct? If we have 2 operator A and B and they are commute, means its commutator equal to 0, like del A equal to del Y and del B equal to del Px. Uncertainty for micro या quantum particle along y axis and uncertainty for quantum particle and momentum along x axis. This is momentum uncertainty for quantum particle along x axis, and this is position uncertainty per particle along y axis. And we know that from the commutator algebra that del y del px equal to 0. So अगर यहाँ पर हम del a की जगह del y को पुट करें, del b की जगह del px को पुट करें, so at this की जगह 0 को पुट करें, so we obtain this one, del y del px equal to 0. It means that the position operator along y axis and momentum operator along x axis are commute to each other, means we can measure both simultaneously. Now for non-commutator operator, that is operator A operator B is not equal to 0, then let operator A equal to position uncertainty and B equal to momentum uncertainty. So the general form of uncertainty principle, that is del x del px greater or equal to iota by 2 psi star a cap b cap psi dx. But we know that the commutator AB or del x del px equal to minus iota h cut. So iota by 2 as it is, और इस की जगह हम पुट करेंगे minus iota h cut. So iota by 2 minus iota h cut psi star psi into dx. But this, the wave function is normalized equal to 1. So by simplify this, we obtain del x del px greater or equal to h cut by 2. And this is the position and momentum uncertainty relation for a quantum particle, which means we cannot measure the position and momentum of particle along x-axis simultaneously. Means हम कभी भी किसी भी क्वांटम पार्टिकल की पोजीशन along x-axis और मोमेंटम along x-axis को सिमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते. इसी वजह से हम कहते हैं कि पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर जो हमारे पास है और नॉन कम्यूट ऑपरेटर है, करेक्ट.